Hello and welcome to the CAA show. CAA, as all of you know, is conversations and analysis, and my name is Juggi Bhasin. They say that all matches, be it personal or professional or even community matches, they are either made in heaven or in hell. But the match between Khalistanis and Canada is a different kind of a match. This is a match of mutual needs, where both the Khalistanis and Canada need each other. और ये हमको बड़ी एक अचंभे की बात लगती है और हमने इसके बारे में कई बार सोचा है कि क्या वजह है कि महीनों बीत गए, साल बीत गया कि कनाडा भारत से पंगे ले ही जा रहा है और कनाडा को खालिस्तान की ऐसी क्या जरूरत हो गई है कि that it seems that Canada prefers Khalistanis over India. Well, there are reasons for that, and I will explain all those reasons today in this particular special episode of the CAA show. But let's start right from the beginning. पहले हम ये समझते हैं कि जो खालिस्तानीज होते हैं या ये जो यूथ आते हैं पंजाब से आते हैं खासकर, और ये लोग जो कनाडा में सेटल हो जाते हैं, ये खालिस्तानीज क्यों बन जाते हैं और इसकी क्या वजह है, एंड व्हाई डू द खालिस्तानीज नीड कनाडा. But before I do that, there's something very important to understand. These are youngsters, ये हमारे ही बच्चे हैं जो पंजाब से जा रहे हैं, जो कि वहाँ पर कनाडा में सेटल हो जाते हैं. और मैं ये आपको ये पूरे मेरी रिसर्च जो कहती है वो आपको मैं ये बता सकता हूँ कि these are not Khalistanis when they leave the shores of India, but they certainly become Khalistanis when they land in Canada. And there are very specific reasons for that. पहली बात तो हमें ये समझना पड़ेगा कि कई ये जो बच्चे होते हैं ये हल्के तबके से आते हैं. दे आर किड्स ऑफ लो इनकम फैमिलीज. और ये कनाडा में किस तरह की जॉब्स करने जाते हैं पहले ये हमें समझना होगा. दे आर नॉट प्रोफेशनल्स, दे आर नॉट डॉक्टर्स और engineers or IT workers who are going for high profile or important or well-earning jobs in Canada. They're basically going to work in the sectors in construction. A lot of them become truck and lorry drivers. They are working in department stores. They are working, some of them are even doing manual labor, farm hands, tenanted farming. इस तरह की कई जॉब्स जो होते हैं ये बच्चे वहां जाके करते हैं. और मैं आपको दोबारा ये रिपीट कर रहा हूं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब ये जाते हैं ये खालिस्तानी नहीं होते, लेकिन वहां पहुंच के ये खालिस्तानी बन जाते हैं और उसकी वजह है और उसकी देयर आर रीजंस फॉर दैट. दूसरी बात जो, और उस पॉइंट को मैं आपको बाद में थोड़ा समझाऊंगा. दूसरा पॉइंट जो हमें समझना पड़ेगा कि ये जो बच्चे जा रहे हैं, एक और धारणा होती है कि ऑल ऑफ देम आर फ्रॉम द सिख फेथ. Let me tell you something very interesting. A lot of them are from interchangeable religious faiths. यानी कि कई बच्चे जब ये हिंदुस्तान में होते हैं, जब पंजाब में होते हैं, तो इनमें से कई पहले से कन्वर्ट हो चुके हैं क्रिश्चियनिटी में. तो नाम उनके डेफिनेटली सिंह या कुछ होंगे, मगर दे आर क्रिश्चियंस. मगर वहां जब जाते हैं तो दे अगेन रीडिस्कवर देयर फेथ अंडर प्रेशर, आई वुड से, तो दोबारा सिख और खालिस्तानी बन जाते हैं. तो देयर इज एन इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ रिलीजियस बिलीफ्स. तो ये कह देना कि ये लोग कट्टर हैं, यहीं से कट्टर हैं और वहां जाके भी अपना कट्टरपना कर रहे हैं, ये गलत है. दिस इज नॉट ट्रू. The religious aspect is a bit of an interchangeable, fluid aspect, and it is taken on sometimes as a convenience to survive when they go to these different countries. दो द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें समझना होगा जब ये बच्चे वहां जाते हैं और ये खालिस्तानी क्यों बन रहे हैं, उसमें 1984 प्लेज अ वेरी बिग रोल इन दैट. अब 1984 का जो पूरा जो नक्शा है उसे हमें समझना पड़ेगा. पहली बात तो इट्स अ वेरी सिंपल लॉजिकल थिंग कि ये बच्चे बहुत यंग हैं, ये 20 साल के भी नहीं होते, 21-22 साल के बच्चे होते हैं, तो इनको 1984 के बारे कहाँ से पता होगा. मे बी इनके जो एल्डर्स हैं उन्होंने उसके बारे में बताया हो, इन्होंने किताबों में पढ़ा हो या फिल्मों में देखा हो या कम्युनिटी लीडर्स ने इसके बारे में बात करी हो. So what I'm trying to say is that they actually have no connect with the events of 1984.
And a quick recap for those of you who might not be familiar, 1984 was a very traumatic year in the Sikh history because there were a lot of targeted killings which are going on in Punjab. It was also the year when Operation Blue Star took place, when a lot of Sikh militants holed up inside the Golden Temple under the leadership of Bhindranwale. They were flushed out by the Indian army on the orders of Indira Gandhi. Now, that is an action which I personally don't agree with. I don't think it was required at all, but it's a fact of history which we have to accept. तो 1984 से इतने साल, इतने डेकेड्स चले गए, उससे इन बच्चों का क्या कनेक्शन है? कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन पूरा 1984 का हवा इनके दिमाग में डाला जाता है and it becomes like a fantasy reality, and I'm choosing my words very deliberately out here. It becomes like a fantasy reality in their minds. It is like a graphic novel which जिसके पन्ने वो खोल खोल के उनको पढ़वाए जाते हैं कि 1984 में आप देखिए कितने अत्याचार हुए थे सिख्स के ऊपर, कितने लोगों को मारा गया था, द इंडियन स्टेट इज अ जेनोसाइडल स्टेट। तो इस तरह की पूरी एक प्रीचिंग है, एक इनकल्केशन है जो कि करवाई जाती है, जिससे एक फैंटेसी रियलिटी की पिक्चर इन बच्चों के दिमाग में डाल दी जाती है। बिकॉज ऑनेस्टली एज आई एक्सप्लेन टू यू राइट नाउ, दे हैव नो कनेक्शन विद 1984। और ये किस लिए की जाती है? नाउ दैट इज द मेन क्वेश्चन, दैट इज द सेमिनल क्वेश्चन विच वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये 1984 का जो हवा है, बार बार इसको रेसरेक्ट क्यों करा जाता है? भिंडरांवाला को जो हवा है, इससे क्यों दोबारा दोबारा एक लाइफ फॉर्म दिया जाता है? व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? I will use this word called identity. Identity politics in Canada. अब ये identity politics का मतलब क्या है? पहली बात आप ये समझिए कि जो बच्चा, सपोजिंग एक बच्चा डॉक्टर है, एक इंजीनियर है या एक प्रोफेशनल है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो उसकी ऑलरेडी एक आइडेंटिटी बन गई है। और मैं ये नहीं कह रहा कि जो बच्चा ट्रक चलाता है, लॉरी चलाता है, उसकी आइडेंटिटी नहीं होती, उनकी भी आइडेंटिटी होती है। बट द फैक्ट इज, whether we like it or not, in the hierarchical scale they are slightly lower down on the order, and एक आइडेंटिटी उनको भी चाहिए होती है। तो जब ये लोग कनाडा पहुंचते हैं तो आपको एक चीज समझनी होगी कि there is something, they are absorbed in an ecosystem out there which I, for want of a better terminology, I call the Gurdwara politics of Canada. अब हमारी जिंदगी में, हम सबकी जिंदगी में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, इन सब की बहुत इंपॉर्टेंस है। वी आर अ नेशन दैट लाइक्स इट्स रिलीजियस बिलीफ्स, and so it is in Canada also. And religion plays a part in our lives also. लेकिन जिसे कहते हैं ना, जो a person who is a matured person, a person who thinks well for himself and for or herself or for a family, they will keep their lives a little separate from religion. Religion, as I said, religion की importance है, but religion doesn't overwhelm our lives. लेकिन कनाडा में थोड़ी हकीकत अलग है। The Gurdwara becomes the epicenter of everything in your life, whether it is your personal life, your professional life, your community, your interpersonal relationships, your relationship with your elders, with your peers, with boys and girls of your age, or with kids. It is the epicenter of everything. We have to understand that. और जब ये एपिसेंटर बन जाता है तो इसका मतलब ये भी होता है कि आप सिर्फ ये नहीं कि आप वीकेंड्स पे सैटरडे संडे को जा रहे हैं वहां पर दर्शन के लिए या कड़ा प्रसाद के लिए या पाठ सुनने के लिए। You are going for much more, that you're going basically to talk of community relations, you're going to talk about community elders जो कि अपने जो व्यू पॉइंट्स हैं लोगों के सामने रखते हैं। So as I said, the epicenter of your entire life is the Gurudwara, and the Gurudwara politics plays a very big role. और यहाँ पर जो कम्युनिटी एल्डर्स हैं कनाडा के, अनफॉर्चुनेटली जो शुरू वाले लोग थे, वो they were the people who had 1984 के बाद जो कई लोग आए थे, some genuine asylum seekers and all that, but उसके बाद भी कई generations के जो लोग हैं, they are unfortunately highly radicalized, and these people ensure कि जो नए बच्चे आ रहे हैं, जो नई पीढ़ी आ रही है, the new generation which is coming from Punjab, they get radicalized
द गोस्ट ऑफ 1984 इज लिटरली से कहते हैं वो भूत जो है उनके दिमाग में डाल दिया जाता है, सो दे बिकम बोथ नॉट क्लोजेट बट full fledged Khalistanis who practice Khalistani or the sloganeering or whatever else they do out in the open. So they ensure that. And how do they ensure this thing? That is the point we need to understand. They ensure it by blackmailing these youngsters. अब blackmail कैसे करा जाता है? सिंपल सी बात है, अगर आपको उस कम्युनिटी में रहना है, आपको उस कम्युनिटी में सर्वाइव करना है, आपको उस कम्युनिटी में शादी करनी है, ब्याह करना है, दोस्त बनाने हैं, यार बनाने हैं, इंजॉय करना है, पॉप म्यूजिक कॉन्सर्ट में जाना है, आपको कुछ भी करना है, तो आपको पूरी रजामंदी कम्युनिटी की आपको मिलनी चाहिए। वो तभी मिलती है कि जब आप जो ये एल्डर्स बोलते हैं, कम्युनिटी एल्डर्स, वो आप उसको मानते हैं, और वो कम्युनिटी एल्डर्स सी टू इट दैट द खालिस्तानी ethic is pushed into their mind, it becomes a part and parcel of their DNA. That is unfortunately the real reality of Gurdwara politics in Canada, and that is why the degree of radicalization is so high in Canada. And willy-nilly, whether we like it or not, a lot of these fresh बैचेस ऑफ यंगस्टर्स हु आर माइग्रेटेड देयर, जो वहां कनाडा चले हैं, जिनको पॉलिटिक्स के साथ, रिलीजियस पॉलिटिक्स स्पेशली के साथ कोई लेना देना नहीं होता, अनफॉर्चुनेटली दैट एंटायर लॉट बिकम्स रेडिकलाइज्ड. दिस इज द मेन रीजन फॉर दैट. आइडेंटिटी को हमें एक और तरीके से समझना पड़ेगा, दैट व्हाई दिस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इज बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर दीज कम्युनिटी एल्डर्स इन कनाडा. और मैं एक बड़ा एक रेडिकल शब्द यहां पर यूज करूंगा, बट इट इज ट्रू व्हाट आई एम टेलिंग यू. सी, एज आई एक्सप्लेन टू यू, मोस्ट ऑफ दीज पीपल, द एंटायर लॉट आर, एज आई सेड, low income, but also low qualification. These are low qualified people who go to Canada, so they are not really the professional class. मगर उनको एक आइडेंटिटी जिसे कहते हैं, वहां बनी बनाई आइडेंटिटी मिल जाती है, एंड इट इज, और मैं कोट्स के बीच में ये बोल रहा हूं, इट्स अ वेरी सेक्सी आइडेंटिटी. और वो आइडेंटिटी क्या है? आई कॉल इट सेक्सी बिकॉज इट इज completely acceptable to the Western mind. And that identity is that of a person, जिसे मैं हिंदी में समझाऊंगा, जो सताया हुआ है, जिसको एक जेनोसाइडल नेशन से जो भाग के आया हुआ है, जिसने असाइलम ली है, a person who is carrying on the resistance against a brutal country from where he or she has escaped. So they take on this so-called sexy identity of सताया हुआ from their own country, जो आया है, जो शरण जिसने ली है in a country like Canada, and therefore the Canadians welcome this kind of a person because they feel कि ये बेचारा है, this person has been discriminated against because he is a religious minority. तो ये एक sexy identity West के आंखों में होती है, जिसे ये लोग quickly they want to acquire because it gives them some brownie points, talking points when they are moving around and talking to people in society. Because otherwise, frankly, in a white country, their identity is next to zilch, to zero. But this gives them some kind of an identity that these are the people who have escaped the tyrannical policies of a big country like India. So identity के ये दो पहलू हैं जो हमें समझने पड़ेंगे, which are applicable in Canada, which apply to this class of people who come from Punjab to Canada. तो ये तो सारी वजह है जिसको हमने समझा है कि why the Khalistanis or why these people who come from Punjab actually need Canada. I will now explain to you why Canada needs these Khalistanis, but before I do that, there's a very interesting point, और एक बहुत ही जबरदस्त contradiction है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा in this entire matter. अब आप, मैं तो नहीं कह रहा सभी गुरुद्वारों में ये हो रहा है, but in a lot of gurdwaras in Canada, especially Canada, UK के अंदर भी, अमेरिका के अंदर भी, आप मैंने खुद, जब मैं लंदन गया था, लंदन तो मैं हर साल किसी ना किसी काम से जाता रहता हूँ, बट इफ यू गो टू द साउथ हॉल गुरुद्वारा, तो बाहर इन सब गुरुद्वारों में भिंडरन वाले की तस्वीरें लगी हुई हैं, लंबी बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई हैं.
भिंडरावाला, जैसे मैंने आपको अभी समझाया, इन 1984 ही वाज अ रेडिकल सिख लीडर. ही वाज एक्चुअली अ टेररिस्ट जिसने कई लोगों को मरवाया था, मारा था, जो भी करा था. एंड ही लेड दैट एंटायर he created that problem against the Indian state, and he was finally killed in Operation Blue Star. ये मैंने आपको समझाया. So Bhindranwala was actually a terrorist. Let's face fact. बट उसके बारे में एक चीज जो अभी तक इस जनरेशन में से कईयों को पता नहीं है, एंड आई वुड लाइक टू टेल दिस टू एवरीवन बिकॉज आई बिलोंग टू दैट जनरेशन ऑफ पीपल जिन्होंने ये भिंडरावाला के जब सब चीजें चल रही थी तो हमने अपनी आंखों से देखा था कि पंजाब में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है, पूरे नॉर्थ इंडिया में क्या हो रहा है. Bhindranwala, besides being the terrorist that he was also a purist. अब purist का क्या मतलब होता है? उसने अपने edicts निकाले थे, postulates निकाले थे, उसने अपने फरमान निकाले थे, which had to be followed by all men and women practicing the Sikh faith. और मैं some of these चीजें मैं आपको अभी बताऊंगा, and you will be shocked, you will be surprised, you will think that I'm making it up, but this is absolutely true. For the women, he said, कि आप कि बीबी तुसी, and I'm speaking in Punjabi, कि तुसी अपने eyebrows ਨੂੰ pluck नहीं कर सकते, which means you cannot pluck your eyebrows, let it grow as it is. You cannot shave off the hair of your forearms, or you cannot use creams to take off the hair from your forearms. अब कई लेडीज का होता है कि थोड़ा नाक के नीचे, लिप्स के ऊपर थोड़े से बाल आ सकते हैं, उसको आप हाथ नहीं लगा सकते. And बाल काटना तो was completely taboo. You could not cut your hair. And for the men, his rules were that obviously you could not cut your hair. You, जैसे कहते हैं कि आपको शीश, अपने जो आपके बाल हैं आपको पूरे रखने हैं. You cannot trim your beards. दाढ़ी को जितना आप खुला रखो उतना अच्छा है. And you had to wear your pagadi in the right way, not in some fancy wrong way. जैसे आजकल कई होते हैं पीछे not डालती हैं and all that. These kind of things were completely forbidden. And Bhindranwale saw to it कि जो लोग उसकी बात नहीं मानते थे, they were eliminated, both men and women. And that has actually happened in Punjab. So that's why I say Bhindranwale was a purist. Now, all these people in Canada, whether they are the community leaders, whether they are the Khalistanis or the young Khalistanis, they are all following Bhindranwala. They have these photographs. He's their ideal. He's their hero. But I promise you, not one of them probably knows the extent to which Bhindranwale was a purist. And why do I say this point? You have to understand. Because today, even today, 90% of these Khalistanis who are Sikhs have cut off their hair. Some of them definitely wear the turban, but they have cut off their hair. They trim their beards, that is, if they keep a beard. Even this Gurpatwan Pannu, if you see him, he is shorn off his hair. He has some kind of a beard. He doesn't look like a Sikh from any quarter, if you ask me. And so, therefore, all these religious edicts are tossed in the wind, and yet you are following Bhindranwale, whether for political convenience or whether you just want to, as I said, assume a sexy identity of a person who is seeking asylum in another country, or for whatever reasons you wish to assume that identity. But if Bhindranwale was alive today, you think he would have tolerated this following of people who practice Sikhism and the Khalistani ideal and do these practices? Not at all. So this is the biggest contradiction which I find in the Khalistan movement in Canada and what was really the reality of Bhindranwale. Now let's come to the other important point of this podcast, which is a very important issue which is affecting relations between Canada and India. And I used that expression before that probably Canada needs Khalistanis more than they need India. And why do I say that? And there are reasons for that. See, in the way that the Khalistanis need Canada, okay, a Pannu needs Canada. In the same way, Canada needs the United States all the time. All of Canada's politics, its economy, its politics, its political outreach, its military, every aspect of Canadian life is to a certain extent completely dependent on the United States. And Canada is like
in a slightly more humorous way, is like the little pannu of United States, Canada. And why is that? And the reason for that is, and why does the US, they have this dependence on the US, and why does the US need Canada to do a lot of their bidding? And I'll tell you the reason why. See, Canada is a very interesting and a bit of a strange country where it is not only the Khalistanis who are found in sizable numbers, but there are other minority groups from different parts of the world. A lot of them are these radicalized minorities who find refuge in Canada. And you must have read reports that a lot of them have become gangsters. They're in the drug trade, smuggling trade. And a lot of, it's not only the Khalistanis, it's a lot of these from Islamic countries, a lot of people from other countries who are there in Canada, who are encouraged actually to play a part in Canadian life, in Canadian politics. And the reason for that, there's symbiosis between Canada and the US is, and you have to understand what is this chain of command. The chain of command is that the US needs Canada to have these minorities, because then there is this constant uproar going on from these minorities that we are persecuted in our home countries, and therefore the US can use that particular narrative to put pressure on rising economies, on rising countries like India. The narrative starts from Canada of the Khalistanis, and this narrative is then picked up by the US, and then there are bodies and there are agencies in the State Department in the US which then push that narrative down, on countries like India, that see, your religious minorities are persecuted, you have these genocidal tyrannical tendencies, and therefore it helps the US to push forward their geostrategic agenda. So this is the chain of command. This is how it moves from Khalistan to Canada, from Canada to the US. So the connection goes right from the person who leaves the shores of Punjab and comes to Canada till to the highest levels of the State Department in the United States. So this is an entire chain of commands which works in that manner. And all of these people need each other, and therefore, and this is my most important point, which I'm coming to towards the end of the podcast, is this. A lot of people feel that these problems between India and Canada will be resolved the moment Trudeau goes. And that is a complete mistake. That's never ever going to happen. The Conservative government might come back in Canada, quite possible, but things are not going to change. I promise you, things are not going to change. They will remain the same. They might actually even worsen because of this chain of command, of the symbiosis between the youth who leaves the shores of Punjab to the way he becomes the Khalistani, the way then these narratives are used by Canada, they are given to the US, and the US uses these narratives to push forward its geostrategic agenda in the world. तो ये कहानी है जो कि एक्चुअली हम देखते हैं कि चल रही है, और ये पूरी एक चेन ऑफ कमांड है. यहाँ से एक जैसे कहते हैं पूरी कड़ी है जो यहाँ से एक बच्चे से शुरू होती है, जो कि मैंने जैसे आपको समझाया वो खालिस्तानी नहीं होता जब वो पंजाब से चलता है. He's an innocent boy just looking for, he has dreams, he wants to make a better living in his life. He's not coming on a political agenda, लेकिन उसको रेडिकलाइज किया जाता है, उसको कम्युनिटी में सर्वाइव करने के लिए सब कुछ करना पड़ता है, और उसके बाद his narrative, his community narrative is used by vested interests to push forward their geostrategic agendas. And this is unfortunately the reality or the equation between India, this Khalistani elements, and Canada. And unfortunately, I don't see a way out. This is going to continue even if the Conservative government were to come back in the next elections. Such is life, as they say. And so, on this slightly pessimistic note, but on a realistic note, I end this podcast, and I hope you really enjoyed this podcast. और हमारे साथ जुड़िए, हमारे पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कीजिए. वो रेड बटन आप देख सकते होंगे, आपके स्क्रीन पर है, उसका दबाइए. I obviously need more and more people to join this podcast. We'll keep coming with interesting analysis on very interesting topics. I'll keep doing that.
And till next time, it's goodbye and cheers from my end.